हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू द डिवाइन गेस्ट प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आई होप मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। सो लेट अस जंप फॉर द टुडे सेशन एंड आप सभी ने टैरो कार्ड के तो बहुत सारे सेशन लिए होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से देखे होंगे, सीखे होंगे। लेकिन आज का जो तरीका है वो बिल्कुल आपको अलग हटके लगेगा, बिकॉज सिर्फ हम प्रिडिक्शन नहीं देखते। टैरो इज ऑल अबाउट लर्निंग, है ना। आपको एक होता है कॉन्सेप्ट, बहुत इन डेप्थ पढ़ना है, बहुत समझने की जरूरत है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिनको सिर्फ समझना है। ठीक है। समझ के बहुत इजीली कैसे टैरो कार्ड से प्रिडिक्शन करते हैं, आज हम ये सारी चीजें बात करने वाले हैं। थोड़े से कार्ड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना क्या होते हैं, ये क्या कार्ड्स का वेरिएशन है, क्या बाइफर्केशन है, ये सारी चीजें देखेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द सेशन एंड वेलकम सोनल मैम। साथ में आप सभी के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में शेयर कर देती हूँ। माय नंबर इज 8130283244। फॉर एनी इंफॉर्मेशन आप लोग इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। वेलकम सोनल मैम। मैम प्लीज स्टार्ट कीजिए। Namaste, everybody. Good evening, everyone. Thank you, Prachi ji. All right, shall we start? Is everybody ready? टैरो के बारे में कौन कौन जानता है, कौन नहीं जानता? Let's not get into that. Let's try to understand with a very open mind today कि टैरो है क्या? How does it help us? Is it something where one needs की psychic abilities होनी चाहिए इसमें? क्या ये जरूरी है कि आप एक जो 78 कार्ड्स है उसको पूरी तरह से बाय हार्ट करना है? बहुत सारे क्वेश्चंस सब लोगों के दिमाग में आते हैं, एंड टुडे आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट टैरो। और आपको ये सबसे पहले बताती हूँ कि टैरो है क्या। सो बेसिकली टैरो इज अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स विच इज गॉट डिवाइन एनर्जी। उसकी खुद की एक एनर्जी है जिसके through which it tells us a lot about ourselves. Tarot cards help us understand ourselves. ये हमारे probable future के बारे में बता सकते हैं। I say probable future क्योंकि क्या होता है कि समझो हम human beings basically दिमाग is very active and it keeps changing itself very often. तो अगर आज मैं सोचती हूँ कि मुझे एक रेड फरारी चाहिए समझिए, बट प्रोबेबली आफ्टर 3-4 months आई विल से कि नहीं, मुझे रेड नहीं, मुझे गोल्डन फरारी चाहिए। बट व्हेन आई हैव थॉट कि मुझे रेड फरारी चाहिए और जब मैंने रीडिंग किया तो उसमें मुझे जवाब आया कि ठीक है, आप ये करोगे तो इसने समय के बाद इट इज पॉसिबल दैट यू विल अचीव व्हाट यू डिजायर। बट ड्यूरिंग दैट टाइम माय माइंड हैज चेंज्ड। तो जो उसका जो प्रेडिक्शन था टैरो कार्ड्स का, क्या वो गलत हो गया? No, the tarot card's prediction was right, but my mind has changed. What I wanted has changed, and therefore the result is going to change. Correct? So that is why I say कि tarot cards हमारा probable future बताता है। और जो हम challenges या difficult phases life में face करेंगे, how to overcome all of those is also guided to us by the tarot cards. कई बार लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि टैरो कौन सीख सकता है? एनीबडी कैन लर्न टैरो। यू कैन लर्न टैरो फॉर योरसेल्फ टू क्रिएट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अगर आप प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो आप टैरो सीख सकते हैं। अगर आप एक ऑलरेडी हीलर हैं तो भी व्हेन यू लर्न टैरो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर हीलिंग, क्योंकि जिस क्लाइंट का आप हीलिंग करेंगे उसके जो ब्लॉकेजेस है वो क्या है वो आपको बताएगा टैरो। सो इट इज अ वेरी गुड सप्लीमेंट्री नॉलेज इवन फॉर हीलर्स। हम में से कोई भी इंसान टैरो सीख सकता है, और एज आई सेड अर्लियर टैरो सीखने के लिए साइकिक होना जरूरी नहीं है।
पर अगर कोई सोचता है कि हाँ फटाफट इससे रिजल्ट मिलेगा, टैरो इज लाइक मैजिक, मैं सीखूंगा क्या, टैरो कार्ड्स पढ़ेंगे एंड माय लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, देन आई एम सॉरी, दिस इज नॉट फॉर यू। क्योंकि टैरो सीख के यू हैव टू कनेक्ट विद द कार्ड्स, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू मेडिटेट, उसमें भी थोड़ी मेहनत जाती है। ये मैजिक नहीं है, इट्स अ डिवाइन एनर्जी, इट्स अ वेरी प्योर एनर्जी। इट्स नॉट लाइक अ गेम ऑफ कार्ड्स कि आप कभी भी कुछ भी लेके बैठ जाओगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सो बेसिकली टैरो हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। इट इज अ सेल्फ हीलिंग टूल, आपको खुद को हील करना है। आपके जो ब्लॉकेजेस है, आपके जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, आपके जो चैलेंजेस है लाइफ में, फाइनेंशियल चैलेंजेस हो या इमोशनल हो या हेल्थ का हो, हर एक चैलेंज जो हम फेस करते हैं, टैरो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि वो चैलेंज किस वजह से है और उस चैलेंज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। दैट गाइडेंस इज गिवन बाय टैरो। सो क्या होता है कि कई बार लाइफ में पैटर्न्स होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक फैमिली है और उसमें एक पैटर्न है कि एट द एज ऑफ 40-45, लेट्स से the man of the house passes away because of a heart attack, और वो 3-4 generations ऐसे होता आ रहा है, तो मतलब वो उसकी जिंदगी में एक पैटर्न हो गया। या तो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल के एक एक समझो, मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देती हूँ कि टुडे आई हैव अ पैटर्न इन माय लाइफ दैट आई मेक फ्रेंड्स, आई बिकम वेरी क्लोज टू देम, इट्स लाइक अ फैमिली, और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। एंड देन फॉर नो राइम और रीजन दैट पर्सन जस्ट मूव्स अवे फ्रॉम माय लाइफ। तो ये चीज मेरे फ्रेंड्स में भी होती है, मेरे फैमिली में कजिन्स के साथ भी होती है। द सेम थिंग इज हैपनिंग टू मी एट वर्क ऑल्सो। सो दिस बिकम्स अ पैटर्न इन माई लाइफ। नाउ व्हाई दिस पैटर्न इज हैपनिंग इन माई लाइफ, tarot cards will tell us. How do I heal myself, what do I heal in myself to overcome this and break this pattern? ये भी हमें टैरो गाइडेंस और एडवाइस दे सकते हैं। सो बेसिकली टैरो, they read the patterns in your life, they see the present current situation that you are in your life, and then they give you a probable future prediction जो हम चेंज कर सकते हैं इफ इट इज नॉट टू आवर लाइकिंग। अगर मुझे टैरो कार्ड ये बता रहा है कि आप, मैं अगर पूछूं कि 6 महीने के बाद क्या मुझे मेरी जॉब में प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या टैरो कार्ड्स जब मैं रीड करती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, 6 महीने के बाद आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। देन व्हेन आई आस्क ये प्रमोशन क्यों नहीं मिलेगा, व्हाट कैन आई डू टू एंश्योर दैट आई डू गेट दैट प्रमोशन विच आई रियली डिजर्व। That way, the tarot cards will guide me, and I, when if I work sincerely towards the guidance given by the tarot cards, I can change my future and I can get the promotion that I want. So basically, tarot cards help you create your future, write your own life story. जो चीज अगर आपको फ्यूचर में बता रहा है वो आपको पसंद नहीं है, तो यू वर्क ऑन इट एंड गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। टैरो कार्ड्स बेसिकली अगर आपने देखे हो तो दे आर वेरी वेरी कलरफुल, दे आर फुल ऑफ पिक्चर्स, दे आर फुल ऑफ पीपल, सिंबल्स है, नंबर्स है, बहुत कुछ है। सो टैरो इज बेसिकली अ लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स, colors and numbers, and we have to understand how to read them. हमें हर एक कार्ड बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। Each card tells you a story. We only have to try to analyze कि वो कार्ड हमें क्या कह रहा है looking at the picture. And then of course उसके जो core meanings है वो तो definitely whenever you learn tarot you will learn them. But as a beginner, the first thing one has to understand how to read the tarot cards is by looking at the picture. The tarot cards basically ना हमारा जो subconscious mind है
That is like a warehouse of all the knowledge that we already have within us, all the wisdom that we have, all the information we need in our lives is stored in our subconscious mind. पर हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसमें इतनी सारी बातें हमेशा चलती रहती है, इतने सारे सोच चलते रहते हैं, अंदर की आवाज, बाहर की आवाज। तो जो सबकॉन्शियस माइंड की जो आवाज है वो दब जाती है। It is being suppressed by your conscious mind, and therefore you're not able to get the information, the knowledge, the wisdom which is already there. You're not able to bring it out. Then, when you read the tarot cards, they help you retrieve that information which is stored in your subconscious mind, and it brings it to the surface where we understand what we are doing in our conscious awareness. ये जो knowledge है उसे बाहर कैसे निकालना है, टू टैप इनटू दैट नॉलेज, टू अंडरस्टैंड कि भाई आप में ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, हम सब में हर एक क्वालिटी है। वॉट एवर वी नीड इन आवर लाइफ टू मेक आवर लाइफ बेटर इज देयर विद इन अस। इट्स जस्ट दैट कि हम बाहर की आवाज से इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इतना क्योटिक हो जाते हैं कि जो हमारी अंतर की आवाज है वो हम सुन नहीं पाते। And that is exactly what tarot helps you understand, hear, and get that knowledge out from your subconscious mind. I hope I'm clear about uh, what I am saying, और आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। एक ये हो गया एक बैकग्राउंड टैरो कार्ड्स का। आप लोगों में से कौन कौन है जो टैरो पहले सीख चुके हैं या कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है? ओके रितु महाजन, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, तो आपके प्रिटी प्रिटी फेसेस में देखो तो आई विल ऑल्सो फील हैप्पी कि कोई है सामने जिससे मैं बात कर रही हूँ। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स अ लॉट शुभा जी। रितु जी अगर पॉसिबल हो तो आप प्लीज ऑन कर दीजिए वीडियो। ओके, so I hope I'm clear till now as to the basis of what tarot exactly is and how it helps us. Now I'm going to, ma'am, okay, ठीक है रितु जी, no problem, no issues. ठीक है. So now what I'm going to do is I'm going to teach you the basic method of reading tarot cards. ठीक है. I'm going to take you back to your childhood, to your time when you were probably in the nursery, higher, lower KG, first standard. Are you ready to go back in time? Awesome. I'm going to share the PPT with you and tell you how it exactly works. Okay, आपको दिखाई दे रहा है मेरा PPT? Great. So what is tarot? और वो सब तो मैंने already explain कर दिया है. Basically, what we are going to understand today is the Rider-Waite cards. There are different tarot cards and different oracle cards, पर आज हम बात करेंगे Rider-Waite cards की। और so this is the basic structure of the Rider-Waite cards. Rider-Waite cards में होते हैं totally 78 cards.
the basic first division, the bigger division of those cards is into two, the major cards and the minor cards. जो major cards है, they are basically cards that tell us about the big events in our life. जैसे कि हमारी जॉब के बारे में, हमारी शादी के बारे में, हमारा फ्यूचर जो है, हमारे जो कार्मिक लेसन्स हैं, जो बड़ी बड़ी इवेंट्स होते हैं लाइफ में, दे आर रूल्ड बाय द मेजर कार्ड्स. और जो छोटी छोटी बातें हैं, माइनर अरकाना कार्ड्स टेल अस अबाउट दैट कि आज मेरा इंटरव्यू है तो कैसा जाएगा, मेरे एग्जाम्स में कैसे मैं पास होगा कि नहीं होगा, व्हाट कैन आई डू टू अचीव पास माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मुझे ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. जो रोज की हमारी छोटी डेली लाइफ में जो हमारी बातें हैं, इश्यूज है, वो हमें बताती है माइनर कार्ड्स. देर आर 22 मेजर कार्ड्स एंड 56 माइनर कार्ड्स. द माइनर कार्ड्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स. जो 4 डिविजन्स उसके उसके हैं, उनको सूट्स कहते हैं हम. The suit of cups, suit of pentacles, suit of wands and the suit of swords. हर एक सूट में वापस 2 डिविजन होते हैं. There are numbered cards from 1 to 10 and then there are the court cards. जो each suit has 4 court cards. So the basic division is minor cards and major arcana cards. The minor cards is divided into 4: cups, pentacles, wands, and swords. Cups is divided into 2, 1 to 10 cards, and then 4 court cards. Similarly for pentacles, 1 to 10 and 4 court cards. Or same thing for wands and swords. This is the basic structure of the Rider-Waite cards. Okay. Now, can everybody see this picture? Great. The picture on my left is a beautiful scenery of lush green grass, clear sky, beautiful clouds. So ये picture देख के, like if you go back to school, I said, let's go back to the kindergarten. We were told कि read this picture. What do you see in this picture? तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये पिक्चर देख के आपको क्या लगता है? Who will tell me? Anybody wants to answer? Please raise your hands. Anybody? Yes, Radhe. Please tell me. हेलो मैम, गुड इवनिंग। Hello. Good evening. Good evening. कहिए. बहुत अच्छी पिक्चर है, ग्रीनरी है, ग्रास है, माउंटेन है, क्लियर क्लाउड्स है Correct. और व्यू बहुत अच्छा है। फीलिंग गुड हो रहा है देख के। Correct. It feels very happy, very positive, right? यस मैम। Positive. Perfect. Now, when we go back to the this picture on my right, what does it feel? Dark clouds. It looks like there's going to be a storm or heavy rains. बहुत ही dull और depressing है, right? यस मैम। So, correct. So now when we see, looking at the picture, सबसे पहले तो एक straight away you see, okay, this picture means it's a happy situation in whatever is going on over there. The other picture is a very sad, depressing picture. तो जो situation है उस picture में is not a very nice, happy one. Two feelings are very, very clear in this picture, right? So this is how in the tarot cards also, when you first pick up the card, you first see the feeling that you get when you look at the picture. What does that card say to you? So this is the first way to distinguish it. फिर आता है ये second picture. Can somebody else tell me what they feel when they see the picture on my left? Yes, Shubhaji. कहिए. The first picture depicts a very happy family.
And second one Correct. is the depressed one, not happy. Perfect. See, awesome. I don't even need to teach you tarot cards. Already अपने आप सीख रहे हो, देखिए. So I hope everybody is understanding what I'm trying to tell you over here कि ये फर्स्ट साइड पे जो फीलिंग आती है, इट इज वेरी टू, ऑफ कोर्स ये इज नॉट द अल्टीमेट ऑफ रीडिंग द कार्ड्स, बट दिस इज द बिगिनिंग हाउ a beginner can start learning to read the cards and understand what these cards are saying. Now see these two pictures. दोनों pictures में we see a person with a crown, तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक king है. That one thing is very clear, right? Let's take the picture on my left over here, this one. See how this person is sitting, first of all. See this throne that he is sitting on. It is a very plush, comfortable, soft throne. बहुत आराम से वो पैर ऊपर टांग ऊपर करके बैठा है. It is basically, what does it show us? It shows that this person does not respect the throne. वो उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है. उसका जो एटीट्यूड है इज अ वेरी एरोगेंट एटीट्यूड, डोंट केयर एटीट्यूड. बस ऐश कर रहा है वो थ्रोन पे बैठ के. Now from this picture, what you understand, first of all, when you see a throne, when you see a crown in any of the pictures in the tarot cards, it means the crown means that the person is in some position, some standing, social standing, has a lot of respect, has a lot of power. ठीक है? When you see a throne like this, which is soft, ये दिख रहा है ना, पूरा cushion वाला है, it's very nice and comfortable. That means that this person has got this throne, this position very easily, without working hard for it. बहुत आसानी से उसको मिल गई, और and that is why he does not value it and does not respect it. ठीक है? Now, when I say king over here, अभी ये जो कार्ड्स बने थे वो बने थे उस जमाने में जब राजा महाराजाओं का जमाना था. Today we do not have kings and queens, but what it implies is a person in power. Let's say, for example, a government officer in a very top position, और किसी कंपनी का सीईओ है, या किसी बड़ी लॉ फर्म का टॉप पार्टनर है. So that is what it depicts. Okay. Now coming to this picture over here. You see this king बड़ी सोच में seriously बैठा है, thinking about something की, probably trying to figure out कि how can he be of help to his प्रजा जो हम कहते हैं, उसके जो लोग हैं, उसकी जो family है, जो भी है. He is worried, he's thinking, he's strategizing कि how can I make things better? What can I do to be a better king, give better comforts and amenities to the people over there? और ये अगर हम throne देखें यहाँ पे, it is a very solid throne, very firm, a very hard throne. उसका ये मतलब है कि ये इंसान यहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्क करके आया है. He has worked with a lot of sincerity, with a lot of dedication, and then he has reached this position and achieved this status in his life. So this is how another way of you reading the tarot cards. Coming now to the major arcana cards. As I said, there are 22 major arcana cards, starting from 0 to 21. Okay. And they basically represent the life lessons we have to learn, the karmic influences in our life which have come from our past or our past lives, and life-changing events, some major events in our life which basically bring a
major change. Like I said, a marriage brings a major change in a person's life. Moving from one city to another, from one country to another, all these things, all these incidents in life are major incidents and life-changing events that happen. Now, the major arcana cards, each card has a specific number, and these numbers are Roman letters. और हर एक कार्ड का नाम भी है. Okay, each card has a specific name and a number, and they have a very deep meaning. ये जो हमने जो अभी examples देखे, they are basically ऊपर ऊपर से जो हम पढ़ते हैं कार्ड देख के, that is the first reading that you see when you see the card. But each of these cards have a very, very deep meaning, and one needs to understand the meaning and then relate it to how it relates in our life, or the question that we have asked the tarot card. You have to relate the two and understand what the card is trying to tell us. So this is basically, it represents your human consciousness and holds the key to your life lessons, the major arcana cards, which I explained earlier also, कि जो हमारे subconscious में जो सारी चीजें बंद लॉक करके हमने रख दी है, उसको सब चीज को वो बाहर निकालता है. And it talks about our accomplishments, our setbacks in life, the lessons we have to learn in this life, the problems, the trials, the challenges, the blockages that we have to go in our life and emerge as winners from them. Let us take the first card of the major arcana. The first card is the Fool. When you see the picture, you see there is this young boy who's standing at the edge of the cliff. उसके हाथ में एक स्टिक और उसके पीछे एक छोटी सी पोटली है, where probably he is carrying his small belongings with him. उसके पैर के पास एक छोटा सा कुत्ता है. There are mountains in the background. There is a sun in one corner, and the entire card is basically dominated by the color yellow. This person is, एकदम बेफिक्र होके अपनी धुन की में सामने ऊपर इमेजिनेशन में विजुअलाइजेशन करते हुए वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, not realizing that he has reached the edge of the cliff. और अगर उसने एक पैर आगे लिया तो वो वहां से गिर भी सकता है. Right? Now, how do you first understand this card? How do you interpret it? The first basic meaning of this card is the number, first of all, is 0. 0 is from where we begin. We as human beings, when we are born, we start from 0. Obviously, when we are born, we are babies and we are nothing. Our life journey starts from 0. So this card basically depicts the beginning of a journey. It could be the journey of a new venture. It could be the journey of a new adventure in life. It could be a new job. It could be anything new that is coming up in your life. ये जो boy है, वो when you look at him, you understand कि he is a very young boy with the innocence, the enthusiasm, the energy of a very young person, very innocent, with not a care in the world. He is just busy in his own thought and moving ahead. अपनी छोटी सी एक पोटली लेके वो adventure पे निकल गया है, not realizing कि what he is going to need in the journey. How long is the journey? उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कुछ सोचा नहीं, बस 2-3 चीजें पोटली में बांध के वो निकल पड़ा है. So it is a very spontaneous act on his part to just take off. The yellow color in the background. Yellow basically, अगर हम yellow color देखते हैं, तो what is the first thing that comes to our mind, our feeling is joy, happiness, brightness, something very joyful and happy.
So this card is basically a very nice, good, positive card. It gives a very positive feeling, the color yellow. It's a color of happiness, of joy. When you see he's standing at the edge of the cliff, it means that अगर वो संभल नहीं गया तो वो आगे गिर सकता है. If he is not careful. The dog at his feet depicts कि उसके साथ he has the support of the people that care for him, who will advise him when he is going wrong, who will take care of him, will always support him wherever he goes, whatever he does. When you look at the sun is the symbol of basically brightness, a new beginning, a joyful, happy ending to any situation. It's the brightness of the day that you feel. It is also denotes success in the event that we are going to attend, or the adventure that we are going for, or the journey that we are on. It will bring in success. जो mountains पीछे हैं, they show that this person is going to, mountains basically depict challenges in life. Now, when you combine all these things together, as I said, it's a story. Each card tells us a story. So what is the story of this card now? This card says that this is this young person who has taken off on an adventure without giving much thought to it. Spontaneously, उसने सोच लिया कि मुझे जाना है, निकल पड़ा. He is not aware of the challenges he is going to face, and he is going to face challenges क्योंकि mountains है. The person is young, तो उसको कोई experience नहीं है किसी भी चीज का. It's just the beginning of a new journey in his life. People who care for him are there to support him, to take care of him, and to advise him when he goes wrong. He might, take a fall if he is not careful. As you see, he's standing at the edge of the cliff. But at the end of the journey, he is going to face success. He is going to be achieving some goal with his hard work and persistence. So this is a positive card. अगर हम yes no questions करते हैं टैरो में, तो yes no का question में the answer is going to be yes if this card comes up. अगर समझो किसी क्लाइंट ने पूछा कि मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, एंड विल आई गेट माय एडमिशन ओवर देयर, एंड दिस कार्ड कम्स अप, what it means? It means that yes, you will get admission in that university. So basically this card is depicting the beginning of a new journey, a new adventure, a new venture, which you will face issues in that adventure. You will have problems, but you will be able to overcome those problems and achieve success. This is how you read this card. ये तो हो गया जनरल रीडिंग. अगर हम इसी कार्ड को रिलेशनशिप से कनेक्ट करते हैं, I'll stop the sharing for some time and do the explanation if it's okay with you people. So when this card, supposing हम रिलेशनशिप की रीडिंग करते हैं किसी क्लाइंट के लिए, समझो एक लड़की आई और वो पूछ रही है कि आई एम इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, और मेरा फ्यूचर क्या है उसके साथ, और आपके सामने आया ये फूल का कार्ड. तो उसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट, द मीनिंग इज दैट दिस person is very young, he has no experience, he has just started a new journey of his life, but he is this relationship cannot be a permanent relationship. It will not last long, क्योंकि वो एक नई जर्नी पे जा रहा है. He is wants to explore life, experience life.
he is not ready to commit in a relationship right now. इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान बुरा है और आपको चीट कर रहा है. It's just that he is too young to commit to the relationship right now at this particular point, क्योंकि उसकी एक नई जर्नी है, उसका एक नया एडवेंचर है, उसको लाइफ एक्सपीरियंस करना है और उसे लाइफ एक्सप्लोर करना है. So he will be there as a friend for you, but if you are looking at a long-term relationship with this person, it is not going to happen and it is not advisable also. Is that clear? समझो यही क्वेश्चन आया बिजनेस के लिए. तो बिजनेस के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि दिस पर्सन इज ऑन अ न्यू जर्नी, उसको एक्सपीरियंस नहीं है. He will face a lot of challenges in the new venture that he is taking up because he is not aware कि वो venture के बारे में उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कौन से उसके skills चाहिए, कौन सी उसकी other things that you need for a business venture. He is not aware of anything. So through experience, through learning, he is going to go on that journey. He's going to face problems, but at the end, he will see success. Because this is a positive card, it is a yes card. इसी चीज को हम लेते हैं हेल्थ पे. अगर हेल्थ का क्वेश्चन आया कि what how is my health going to be in the next 6 months, और आया फूल का कार्ड, तो क्या कहेंगे आप? आज वो लड़का खड़ा है at the edge of the cliff. So what does that mean? That there is a possibility कि वो वहां से गिर सकता है. Correct? When you see that there is a possibility that he can fall down, it means that there are chances that you may come across some accidents in your life, or you may fall down and hurt yourself. Another way of looking at it would be कि you are a little careless, क्योंकि वो देखो ऊपर आसमान की तरफ देख के वो आगे चल रहा है, उसका ध्यान नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है. So it would also mean in a health relationship कि you're not careful about your health, you're not taking care of your health. You're probably eating a lot of junk food, you're not eating nutritious food, you're not eating on time, you're not having sufficient intake of water or liquids. This is how each card for a different question will have different meanings, which we have to then understand कि basic card का जो general रीडिंग है तो वो समझ लिया हमने. जो पिक्टोरियल रीडिंग है, जो उसमें सिंबल्स है, वो सब उसको कंबाइन करके, उसको accumulate करके, उससे assimilate करके we have to read the card for every different situation. Am I clear? Is this कुछ जा रहा है, समझ में आ रहा है सबको? Give me a thumbs up if you all can. If you can, if you want, you can write in the chat box. Thank you, Sarita ji, for your response. Okay. Let's go to the next card. This is the card of the magician. This is the number 1 card. The fool was 0. That is the beginning of the journey. And this is the next stop of the journey, number 1, which is the magician card. When you hear the word magician, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? Somebody who is very talented, who is very good at creating an illusion, who does what he says he is going to do. अगर आप मैजिक शो देख रहे हो और मैजिशियन ने कहा कि मैं, उसकी जो असिस्टेंट्स रहते हैं कि वो कहेगा कि मैं इसे बॉक्स में डाल के आई एम गोइंग टू कट हर इनटू 2, यू नो फॉर श्योर
कि वो मैजिशियन वो करके दिखाएगा, वो बोलेगा कि मैं इसको गायब करके दिखाता हूँ, वो गायब करके दिखाएगा. So basically, what it means that the magician is a person who does what he says, he knows what he is doing, he is very confident of what he is doing. अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो अगेन ओवर हियर द बैकग्राउंड इज येलो. ये अगर हम देखें तो इट लुक्स, ये जो टेबल है यहाँ पे, ये दिस टेबल ऐसे लग रहा है कि वो पूरा सजा के रखा है. ही इज प्रॉब्ली स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज विच हैज बीन डेकोरेटेड. एंड remember I told you that the minor cards have 4 suits. So ये 4 suits के ये सारे उसके जो टूल्स हैं यहाँ पे है. ये जो है कप्स का है, दिस इज पेंटिकल्स, this is sword, and this is the wands. So what it basically means that the magician has all the tools necessary to perform his act, to do what he desires to do. He has the power, he has the presence, he has the confidence, and he will achieve what he wants. He is completely connected. उसका एक हाथ है ऊपर आसमान की तरफ towards the divine, and one hand is pointing downwards towards the ground, that means towards the mother earth. तो इसका ये मतलब होता है कि he is completely connected and aligned with the divine energy as well as the earth energy, and he is in complete balance. इसे हम मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी कहते हैं, क्योंकि जो एज आई सेड, जो मैजिशियन कहता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा तो वो डेफिनेटली 100% करके दिखाएगा. तो जिस इंसान के रीडिंग में ये कार्ड आता है और अगर वो पूछेगा कि क्या मैं बिजनेस नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, विल आई बी सक्सेसफुल इन दैट, इट्स 100% यस, बिकॉज दिस इज नोन एज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन. जो भी अगर आप अपनी डिजायर के लिए, विश के लिए क्वेश्चन करेंगे और ये कार्ड आएगा रीडिंग में, दैट मीन्स दैट वर्क इज गोइंग टू बी डन. It means that you will have all the resources, or you have all the resources that you need for your venture. You have the power, you have the intelligence to do what you need for that business venture. You have the fire in you to take the right action at the right time, to do what is required for that business venture. तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब, ये resources मतलब finance, पावर है, यू हैव द इंटेलिजेंस, दिमाग है, एक्शन लेने की क्षमता है. सो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर विल डेफिनेटली ब्रिंग यू सक्सेस. ये जो हम फ्लावर्स देखते हैं यहाँ पे और नीचे, फ्लावर्स एंड प्लांट्स ऑलवेज मीन ग्रोथ एंड सक्सेस in whatever that question is. So that means that there is going to be success in whatever you are planning. अगर हम कलर्स की बात करें तो मैजिशियन ने पहना है अंदर व्हाइट कलर एंड दिस ऊपर रेड रोब है. व्हाइट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी. दिस person is very clear in his intentions. He is not here to kind of cheat you in any way. Creating an illusion as a magician is not cheating, sorry, it's his job. और ये जो रेड कलर का रोब है, that indicates the power that he has, the confidence that he has. So अगर ये कोई इंसान के रीडिंग में आता है, that means that person has got a clean heart, his intentions are clear, he has the power and the fire in him to take the action, he has the money required, he has the mind intelligence that is required for what he wants to do, and he will 100% achieve success in what he's planning to do. And this again, as I said, is a yes card. Am I clear? आते हैं हम Empress, the third card. Now, over here, what we see is this red seat that she's sitting on.
It looks a very comfortable seat. She is wearing a crown. उसका क्या मतलब हुआ? She has the power. She is in a position of power. She has got this, very easily the position. She is an empress basically. तो आराम से उसको वो पदवी मिल गई है empress की. She is very well dressed, looking very pretty, sitting very comfortably. So she is a person who takes care of herself, has got power, is sitting and, enjoying life, sitting in luxury. There is a lot of abundance in her life. You see from the way she's sitting, the way she is dressed. और ये जो यहाँ पे आपको साइन दिख रहा है, this is the sign of Venus. Okay? What does Venus stand for? Venus stands for luxury. Venus also stands for love. तो ये दोनों चीजें हैं उसके पास, luxury भी है and love over here. A very important aspect of this card over here is self-love. Now you see this empress over here. She has, she's taken care of herself. She is well dressed. She's pretty. She's wearing jewelry. उसके कपड़े अच्छे हैं. आराम से बैठी हुई है, which tells us that all of us, whatever we are doing in life, जो भी हमारे responsibilities, as an empress, she also has got responsibilities. एम्परर तो है पर एम्प्रेस को भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम रहता है. So in spite of all the responsibilities of taking care of the children, taking care of the emperor, partly taking care of the प्रजा around them, फिर भी वो अपने आप को मेंटेन करती है, अपने आप को खूबसूरत रखती है, अच्छे कपड़े पहनती है. So here the underlining meaning of this card is self-love. अगर किसी भी क्लाइंट को ये कार्ड आता है रीडिंग में, लेट्स से कि क्लाइंट कह रहा है कि यू नो I am not my husband and my family members are not basically giving me the respect and not treating me right in the house, और मुझे बहुत इग्नोर करते हैं. I don't have a say in anything. तो उसका क्या मतलब होता है? और ये कार्ड आया, what does it mean? The first thing we have to understand over here is कि हम जो एनर्जी रेडिएट करते हैं वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर ये क्लाइंट अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती, अपने आप को मेंटेन नहीं करती, अपने आप का ख्याल नहीं रखती है of her needs, her desires, her appearance, and she does not give importance to herself. So what is the energy that she is radiating is, I am not important. Now, when you yourself don't consider yourself important, how is the other person going to think that you are an important person, that they have to listen to your opinion, or they have to give you a chance to speak, or they have to consider what you want to do in life? Nobody is going to do that. They are just going to ignore you, push you aside, and do what they want. So when this card comes, the first thing you tell your client is first practice self-love. खुद को प्यार करना सीखो, खुद की बॉडी को प्यार करना सीखो, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझना सीखो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेंटेन योर अपीयरेंस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. You're ignoring your health, you're putting on weight, you're not doing any exercise, you're sitting like a, ekdam haggard, ragged. Nobody wants to see anybody like that because you're not giving yourself importance. So nobody else is giving you importance. This is one of the very important meanings of this card, the Empress card. उसका दूसरा जो meanings रहते हैं, when you see all this fertile जो ग्रास है यहाँ पे, पीछे भी सारे ग्रीन ट्रीज वगैरह हैं, that all indicates fertility and growth in life, abundance in life. So when this card comes, that means that person is going to grow in life, there's going to get abundance in life.
It is also the card of creativity. जो हम समझो कि कोई एक आर्टिस्ट है और he gets this card, it means that he is going to succeed in whatever creative field he is in. और अगर वो creative field में नहीं भी है, उसे किसी भी creative hobby inculcate करनी चाहिए, because that is going to give him a lot of inner peace. It is going to help him grow in life. It is going to help him get a lot of clarity of thought also, because that creativity brings out all your um, joy, happiness. It also clears up your mind. So, this is a card of fertility. It is a card of abundance. It is a card of creativity. It has got the sign of Venus, as I said. Crown जो है वो डिपिक्ट करता है that she has got a lot of power and has got some position in life somewhere. और अगर समझो कि कोई क्लाइंट कहता है कि we are planning to start a family, तो क्या is it going to be possible कि I get pregnant? And this card comes up. So you can definitely say yes कि yes, there are very good chances कि आप pregnant हो सकते हो. It is a yes card in general also, and it is a card for pregnant fertility card है, तो pregnancy भी possible हो सकती है इसमें. ठीक है? Moving to okay. I'm moving to the card of the Hermit. This is card number 9. Abhi, when you look at this picture, somebody tell me now, what do you read over here? Who's going to tell me? कौन बताएगा? क्या दिख रहा है इसमें? Anyone apart from राधे जी? और कोई है? शुभा जी, सविता जी. चलिए सविता जी, यू आई नीड यू टू switch on your video, please. Please unmute yourself. जी कहिए. ये एक बुजुर्ग आदमी है जो रोशनी दिखा रहा है, कोई गुरु है जैसे. ओके. और जैसे कुछ गाइड कर रहा हो. ओके, वेरी गुड. जी शुभा जी. It's like going inside, reflection inside. You are going to have to go inside to reflect and think. Okay, right. What do you see first thing when you see the card? I see you have to go like, the light is within, you have to go within and there is a light, but you need to go inside you. आपने टैरो सीखा है? Yeah. Okay, yeah, and you're right. I'm not saying anything about that, but I want a general answer. Yes, Saili, tell me. Yeah. Okay. Yes, ma'am. It shows that the person is looking down, like in the photo. So, Okay. there is some grief in him. Okay. He's carrying something that is okay. The light he's carrying, but he's not happy. The background is also not happy. He's also not happy. Maybe there is some disappointment and like नीचे देख के चल रहा है. मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है. मतलब लाइट तो है, तो लाइट अगर है तो देख के चल सकता है. बट राइट नाउ ही देयर इज सम डिसअपॉइंटमेंट एंड पीछे का भी मतलब एकदम ही वो बोलते हैं ना कि डिसअपॉइंटेड है, कुछ ना कुछ हर्ट है. Lovely, very nice. Have you also learned tarot कि ये अपने आप अभी बोल रहे हो? मैम अपने आप बहुत थोड़ा नेट से मतलब जैसे रिसर्च कर मतलब देख के ये आई हैव Okay. नॉट प्रोफेशनली लर्न. Okay, nice, very good. So this is what I was looking for. जब मैंने आपको ये जो
beginning में जो cards दिखाए and I showed you the colors and the gray card, basically that is what the answer I was, not that आप गलत थे शुभा जी, but from the explanation that I gave, that was the answer I was looking for, कि सबसे पहले जो दिखता है वो है color on the card, the gray color, which shows it's not a happy card. It is, there is some sort of sadness, sorrow, depression, जो भी हम कह सकते हैं, वो दिख रहा है इसमें. And that is the answer I was looking for. So all of you are absolutely right. This is a little bit of a sad card if you go to say. And one thing you must remember over here, no card in tarot is ever bad. ठीक है? हर एक कार्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, each and every card. Some of them have a little more of the negative and less of the positive, but each and every card has positive and negative. अगर दिखने में भी अगर कोई कार्ड हमें लगता है कि ये बहुत ही नेगेटिव है, but there is always a silver lining to it and there is a reason for that negativity, because I won't explain more in that, but just generally I would want to be very clear कि कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं होता है इसमें. ठीक है? So here what all of you all said was perfect. It's a sad looking card. This man is not happy. He is thinking मैं आगे क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, और हाथ में उसने लाइट पकड़ के रखा है और एक हाथ में एक स्टिक भी है. So what this shows us today is that stick means support. तो जो भी उसके फैमिली है, उसके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो भी है उसकी लाइफ में, उनका सपोर्ट तो उनके पास है. दिस पर्सन हैज द everybody's support. He is not alone. And the light shows us that there is light within him, but he is refusing to see that. हाथ में लाइट है फिर भी उसकी नजर नीचे है. It means that he is not looking at the wisdom that he has inside him, the knowledge that he has inside him. He is lost in a very negative thought process, mindset. He's unhappy with whatever he's doing today, wherever he is in his life. He's not happy. He's looking for a change. He doesn't know where to go. So when this card comes up, he's also feeling very lonely, but he does not realize कि उसके पास सब लोग हैं लाइफ में उसे सपोर्ट करने के लिए. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट ही फील्स लोनली इन लाइफ. कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कि आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एंड दैट इज द टाइम व्हेन ईच वन ऑफ अस नीड टू काइंड ऑफ यू नो sit down in solitude, try to clear our thoughts, meditate, look for answers. कई बार जब हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, what we end up doing, we end up talking to 10 people and taking their advice. अरे मेरा ये बिजनेस ठप हो गया, मैं क्या करूं? कोई बोलेगा बंद कर दो, कोई बोलेगा लोन ले लो, कोई बोलेगा पार्टनर ले लो, कोई बोलेगा कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करो. Each one is giving their feedback based on their thinking and their mindset. Not that anybody is trying to give you wrong advice over here, but it is according to their mindset. Now, it is not necessary कि वो जो सोच रहे हैं आपके लिए वो आपके लिए सही हो. आपको आपके लिए सही आंसर ढूंढना है within yourself. You have all the answers. Remember, in the beginning of the class, I told you कि हमारे subconscious में हर एक चीज है, वो अपना एक पूरा एक वेयर हाउस है जहां हमारी विजडम, हमारा नॉलेज, हमारे बिलीफ, हमें जो करना है जिंदगी में, वो सब नॉलेज है अंदर. बट वी टेंड टू इग्नोर ऑल ऑफ दैट एंड फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग just outside ourselves. And this card tells you that you don't need to look outside for answers. You need to look within. You need to introspect. You need to self-reflect and get your answers. If you need, spend some time alone thinking, meditate, go off for a few days to a resort in a beautiful place where you are connected with nature.
and think, what is it that you want in life? What is it that you need to do in life? Okay? So this is the Hermit card, which it says inner reflection, looking for direction, introspection, and the gray row basically shows that it is a sad situation, not a very happy place that the person is in. अगर इसको हम लेट्स से करियर और फाइनेंस के साथ रिलेट करना चाहे तो क्या बोलेंगे हम? This yes, tell me. Tell me, Shubha ji. You will ask him to, कि आप सोचो समझो उसको पहले ठीक से अच्छे से, and then go ahead. First think, क्या पूरा उसको अच्छे से समझ लो. Assess the situation. Yeah, very correct. Correct. Also, here sometimes, what it also means कि कभी-कभी हम जिंदगी में materialistic benefits या जो हम desires और satisfaction ढूंढते हैं life में to feel happy. At times, what is necessary is to move your focus away from that and focus a little on spirituality, a little more on living a minimalistic life. जब बहुत सारा abundance and materialistic abundance and you have too much of all of that, दिमाग थोड़ा confused हो जाता है and too much of anything is not good. It becomes overwhelming. So here it would also mean that you probably need to not just think on the material aspect of life, but think on the spiritual situations also. Relationship की बात करें हम अगर, in a relationship, let's say the couple is having an issue और ये कार्ड निकलता है, तो इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि शायद जो उनके बीच में जो इश्यूज हैं उनको और अच्छे से समझना जरूरी है कि ये इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं, and in order to do that you need to kind of give yourself space. Both of them need to take space, probably stay apart for a little while, introspect कि आपको इस relationship से क्या चाहिए. First of all, why are you unhappy? Why is anybody unhappy in a relationship? Is one, you don't get what you want. That is the first thing. So the first question that you ask them is कि आप इस relationship में क्या चाहते हो? Then what are you getting and what are you not getting? Now supposing there are 5 things that you're looking for, you're getting 2 and you're not getting 3. So are those 3 things that you're looking for that important for this relationship? You need to prioritize, you need to self-reflect कि okay, इस चीज को मैं जाने दूं तो ठीक है, चलेगा. I will adjust, I will compromise, because every relationship is based on adjustment, on compromising. Nobody gets everything that they want in life, है कि नहीं? कहीं ना कहीं थोड़ा लेन देन दोनों couples के बीच में होती है. The husband will let go something, the wife will let go something. So both of them have to sit and think individually कि आपको इस relationship से क्या चाहिए, reflect what is it that you want, what is it that you don't like in this relationship. दोनों चीज है, जो आपको चाहिए और जो है जो आपको पसंद नहीं है. And then reflect, sit down, discuss, talk. But first thing you need to do is reflect individually and then move ahead. Is it clear? Let's take the card of strength. This is the last card I will discuss और उसके बाद थोड़े questions लेंगे हम, ठीक है? This is the card of strength. Now over here again, the first thing that strikes us over here is the color yellow, which depicts happiness,
joy, success. Now, here you see there is a lady in white and there is a lion over here. A lion is supposed to be a very ferocious and a aggressive animal. पर ये इतने आराम से खड़ा है इस लेडी के पास में. शी इज पेटिंग हिम एंड ही इज एक्चुअली स्टैंडिंग देयर एज इफ ही इज अ पेट डॉग. है ना? तो इससे हमें क्या समझ में आता है? The first thing one understands by looking at this card is that by love and patience, you can, what do you say, persuade other people, get them to be less aggressive in life, be friends with you, be compatible with you. So the first thing that comes up is love, patience, compassion. Okay? So with your love, with your patience, with your compassion, and card has strength ka. This strength is not physical strength. We are talking about the inner strength that each one of us has within us. So this card says that you have the strength to overcome any challenge in your life with love, compassion, and patience. This line here can be considered as a challenge in life. It can be considered as your uh, kind of an enemy in life, also, the person you don't get along with. So what it says is कि अगर आप पेशेंस के साथ काम करोगे, लव के साथ काम करोगे, तो जो भी आपके अगेंस्ट है, जो भी आपका एनिमी है, जो भी के challenges है. 1 second. Rishi, shut it. No, it's bothering my throat. Sorry. You can overcome all of it with your inner strength, with your love, with your patience, and your compassion. Now, the colors, if we take the colors, the lion is red in color, which shows a lot of power, a lot of aggression. Red color also symbolizes aggression in anybody. Or white symbolizes purity and love. So, anger and aggression has been controlled, brought into control by love and pure intention. These are how different meanings you can take from the card and then apply it to whatever question that we have, from the client. This again is a very positive card. हम नीचे देख रहे हैं पूरा ग्रीनरी है, पीछे भी ग्रीनरी है. There is a smile and a lot of calmness and peace on this lady's face. And the card is yellow. So all these bring us to the conclusion that it is a yes card, it is a happy card, it is a card for success, for happiness, for growth, basically, in whichever aspect we consider it. So that is the last card that we discussed today. And now I'm going to stop sharing और थोड़ी बातचीत करते हैं. One minute, huh? Why is the view not coming right? All right.
बात करने के लिए एक दूसरे को देखना पड़ेगा. Request all of you to switch on your videos, please. Whoever can do it, if you are at work and you can't do it, I understand. If you're traveling, I will understand. But अगर आप घर में हो, please switch on your videos. ठीक है. All right. First, any questions, please raise your virtual hand and I will answer them. कोई questions हैं? Okay, राधे जी, कहिए. Please switch on your video if you can. सॉरी मैम, मैं ऑफिस में हूँ, मैं वो ठीक है, वीडियो no issue. No problem. कहिए. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. मोस्टली टैरो Thank you. में ज्यादातर हेल्थ के आता है, रिलेशंस के लिए आता है, करियर वगैरह. या तो आंसर हाँ होगा या तो ना होगा. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो वहां पे एक अलग क्वेश्चन चलता है जो मैंने पुट भी किया था कि करंट हम्म. फीलिंग होती है. हम्म. तो The वो current चीज feeling. तो Yeah, वो कहिए. जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे कार्ड में, तो जैसे अगर अगर मैं लास्ट का एक कार्ड लूं कि अगर स्ट्रेंथ का कार्ड है तो स्ट्रेंथ का कार्ड करंट फीलिंग में क्या बता रहा है, या हर्मिट का कार्ड है वो करंट फीलिंग में क्या बता रहा है. Okay, so let's take the hermit card. Current feeling. Current feeling. अगर मेरे रीडिंग में आया तो it means that I am very not in a very good state of mind. I am upset. I am not happy with the situation I am in. I am feeling very lonely. मुझे आगे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो what I need to do is self reflect, go within myself, understand myself better and find my answers within me. मेरा करंट सिचुएशन ये है कि मैं हैप्पी नहीं हूं. मुझे बहुत कंफ्यूजन है दिमाग में, बहुत सारे क्वेश्चंस है दिमाग में और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दैट इज द करंट सिचुएशन व्हेन द हर्मिट कार्ड कम्स अप. इफ आई टॉक अबाउट द फूल कार्ड, करंट सिचुएशन क्या है? मैं निकल पड़ी हूं अपनी नई जर्नी पे, नहीं विदाउट मैम, करंट थिंकिंग, फीलिंग. विदाउट प्लानिंग. करंट फीलिंग मैम. हाँ जी. करंट करंट फीलिंग. फीलिंग वही हाँ. होती है ना कि मुझे एडवेंचर पे निकलना है. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम केयरलेस, आई आई एम मस्त, एकदम हैप्पी, स्पॉन्टेनियस एनर्जी है मेरी. आई एम फीलिंग वेरी यंग एंड इनोसेंट, केयरलेस, स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड है मेरा. मतलब सामने वाला पर्सन मेरे बारे में ऐसा फीलिंग रखता है. हाँ, तो वो सोचता है कि एक ये नया, सी इफ इट इज बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय, ठीक है, तो हम्म. अगर ये रिलेशनशिप के बारे में अगर है कि उसके फीलिंग्स मेरे लिए क्या है, तो एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि ही इज ओके विद द रिलेशनशिप, पर इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिकॉज इट्स अ न्यू जर्नी फॉर हिम. उसको लाइफ और एक्सप्लोर करनी है. तो अभी ठीक है, ये रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है. आगे जाके कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे जाएगा रिलेशनशिप. ही इज फीलिंग फाइन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. आई एम ओके विद दिस सिचुएशन. ठीक है. ओके मैम, एक्चुअली वो यूट्यूब पे ज्यादातर वो करंट फीलिंग वाले ही क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैं उससे ही रिलेट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि दैट इज मोस्टली. यूट्यूब पे जो आता है वो बेसिकली सी दैट इज टू अट्रैक्ट पीपल टू कम टू यू फॉर अ रीडिंग. इट्स नॉट एन एक्चुअल रीडिंग, क्योंकि एक्चुअल रीडिंग में ये एक सिंगल क्वेश्चन और एक सिंगल कार्ड पे रीडिंग नहीं होता है. दैट इज जस्ट टू बेसिकली, मैं नया स्टार्ट कर रही हूँ टैरो रीडिंग, मुझे लोगों को अट्रैक्ट करना है. द फर्स्ट थिंग पीपल गेट अट्रैक्टेड टू इज लव रीडिंग्स. What is my ex thinking about you, about me? What is my is he thinking about me right now? What are his feelings for me? तो ये सब चीजें मास को अट्रैक्ट करने के रहते हैं, पर दे आर नॉट ऑथेंटिक रीडिंग्स, फ्रैंकली स्पीकिंग. क्योंकि एक कार्ड से रीडिंग नहीं होता है. यू नीड a set of cards to understand the
सॉरी, एनर्जी ऑफ द पर्सन, योर एनर्जी जो है, उसको रीड करने के लिए थोड़ा और उसमें डीप जाना पड़ता है. रैंडमली यू कैन नॉट जस्ट वन कार्ड रीडिंग नहीं होता है, सॉरी. If it's a yes and no, yes, that one card reading works. But for other questions, one card से सही आंसर नहीं मिलता. ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू. You're welcome. Yes, Saili, कहिए आप. Hello, ma'am. Ma'am, I have Hi. two questions. I wanted Yes. to ask, like how you said that the tarot card works basically on your energies, right? कि आपकी positive energies है, negative energies है, current energies है. So then energies keep changing, right? Like अपना like our Correct. mood. So then, how accurate would be the reading? As in, if today I take a reading from you, if I am feeling very low, so then you will catch that vibrations and you'll give me a reading according to that. But tomorrow, if I come to you after 5 days or something like that with the same question, obviously you will pull out some other cards. Obviously, the same cards won't come. It might be, but then still there are very low chances the same cards are. Then if the cards changes, the reading also changes. So if ऐसा है कि एक वीक में अगर दो अलग अलग रीडिंग्स आए I और वो understood what you're saying. Today, when we do a reading for a person, I am not reading your current energy, whether you're feeling low or you're feeling happy. I will be reading the energy of the question you ask me, correct? Whatever your question is. You are coming to me feeling low, but you are coming to me with a question about something, about some issue in your life, हम्म, right? So I will be हम्म, doing reading on your issue. Supposing you say कि um, I have an issue with my colleagues at work and how do I handle that situation? या मैं उसके बारे में क्या करूँगा? Why is that happening to me? So हम्म, I will do the reading for that particular issue that you are facing in your life. Although हम्म, you're feeling low or happy at that moment will not affect that reading. What will change is, as I said earlier, कि today you say कि okay, I want to get married to XYZ. Will I get married to him? When will I get married to him? तो अगर टैरो कार्ड ने बोला कि हाँ उसके साथ शादी होगी and within a period of say 8 months वो final हो जाएगा. Now this हम्म, is based on your current energy for that person, correct? हम्म, अगर 3 महीने के बाद you have issues with him, you have broken up with XYZ, तो obviously जो मेरा रीडिंग है वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी एनर्जी चेंज हो गई है. That is how your energy will change the reading. हम्म, Because you do not want to get married to that person anymore. You understand what I'm saying? okay, Today I am feeling low. I understand what you're saying, but that is not what I'm reading for you, no. हम्म, I am reading the question based on the cards based on your question. So that does not change. And for any question in generally now, कोई भी अगर client आता है question के साथ, तो same question we cannot ask for at least 2 months because you have to give the client and yourself time, if it is for yourself, if you're reading for yourself, to understand that energy and work according to what the card has told you to work upon, to bring about the desired result. हम्म, अगर आप मेरे पास आते हो कि मेरे फाइनल कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं and will I do well in those exams? And I will हम्म, tell you, if you study hard, if you follow this, then you will get a good result. And then again, हम्म, after like 10 days, you come back to me. That doesn't make sense because you have to work on those energies. You have to study hard. You have to put in that effort to get the desired result. तो एक हम्म. 10 दिन में आप वही क्वेश्चन लेके वापस आ जाओगे तो उसमें कोई चेंज आने वाला So it नहीं is है. not advisable like to clients that you cannot repeat the question for some time at least because I have seen lot of people
they keep coming and asking, मतलब मैंने देखा है बहुत बार कि बहुत लोग है ना वही क्वेश्चंस, No, it मोस्टली doesn't make sense रिलेशनशिप because रिलेटेड. when you are reading the cards are telling you कि अब ये अगर आपका गोल है तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी है, तो वो चीजें करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना. Tomorrow I say कि okay, I am in a bad relationship, how do I improve that relationship? तो मुझे एडवाइस आता है कि you need to work on your anger issues, he needs to work on XYZ. तो once you start working on these issues and understand each other better, your relationship will improve. पर वो प्रोसेस होने के लिए टाइम भी तो लगता है. अगर मैं वापस एक महीने में, तो वो चेंज आने वाला नहीं है. पर्सन कैन नॉट चेंज सो फास्ट. तो एक महीने में वापस मैं वही क्वेश्चन लेके आ जाऊंगी. दैट डजंट मेक एनी सेंस, नो, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन योर सेल्फ टाइम टू चेंज, टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. So you have to give at least 2 months, depending on what your question is, what you're looking for, उसको कितना टाइम लग सकता है. Of course, all those permutation combinations are there. पर हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में वही क्वेश्चन लेके आप आ जाओगे तो उसमें कोई फायदा होने वाला है ही नहीं. And ठीक है. ma'am, one more question is there. Yeah, Like yeah. when you explain the cards, you Hmm. said that some cards are yes cards, some cards are no, like yes and no question है. But अगर Hmm. पॉजिटिव कार्ड है एंड नेगेटिव क्वेश्चन आया, या नेगेटिव कार्ड है एंड पॉजिटिव क्वेश्चन आया, तभी भी हम लोग yes and no कार्ड के हिसाब से देंगे, या मतलब बिकॉज See, लाइक. there are specific cards which have specific yes and specific no's. So if a negative card has come, whatever the question is, the answer is no. It doesn't matter what the Okay. question is. So The even answer if is the no. question is positive and the card is negative, then also it will say no. Question is positive, but the card is saying no, na? So the answer will be no. Like if I say कि question is positive, मतलब क्या मैं बिजनेस में आगे बढ़ूंगी, और नेगेटिव कार्ड आया जैसे कि हर्मिट का कार्ड है, उसमें नो आंसर है. करेक्ट, इट्स अ नो कार्ड. आंसर इज गोइंग टू बी नो. एंड मैम सपोज ऐसे आया, अभी आपने जो आई गेस वो क्वीन क्या था वो, एम्प्रेस ना, क्या था आपने वो, एम्प्रेस. तो एम्प्रेस, तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड वेयर द इट्स अ यस कार्ड. एंड इफ यस. समवन आस्क कि ब्लैक मैजिक किया है, और तो यस आएगा इसमें बिकॉज द कार्ड इज पॉजिटिव ना, बट. The card is positive, but the answer is yes. You don't look at the card, you look at the answer. It's a yes answer. When I say ओके. it's a yes card and a no card, means for a yes and no question, the answer will always be yes or it will always be no, depending on which card it is. A yes card ओके. will always say yes for whatever the question is. And you have to remember that जो cards निकलते हैं, they will always be the perfect answer. ओके. ओके. अगर जैसे आपने कहा कि ब्लैक मैजिक किया है और एम्प्रेस आया इन अ यस एंड नो क्वेश्चन, ओके, इट्स अ हाँ. यू आस्किंग कि क्या सो एंड सो पे ब्लैक मैजिक हुआ है, हाँ. एंड द एम्प्रेस कार्ड कम्स, दैट मींस यस हुआ है. अगर हर्मिट कार्ड आता है उसी क्वेश्चन के लिए, इट मींस नो, नहीं हुआ है. गॉट इट? Okay, okay, okay. I was confused because I thought हाँ. maybe depending upon the energy नो, of the card, or नो, नो, because नो, नो. the female is so positive, and No, uh, that's why it's you only have to look at that yes or no for a yes or no question, not for all questions. That is why I said कि it's an entire process of learning how to read. इतने oh, ये 1-2 घंटे का सेमिन क्लास में हम पूरा समझ नहीं पाएंगे. So don't try to read for anybody as of now if you have not learned. That is what I would request all of you all. This is just a basic knowledge that I am sharing with you all. तो अगर इंटरेस्ट है तो आप आगे, if it's you find it interesting and you want to learn, you can learn and then do your readings. But इतनी सी नॉलेज के साथ अब रीडिंग नहीं करना, it is not right. ठीक है? okay, So ma'am. don't try Thank you to so much. apply what you have learned today in anybody's readings, because there are a lot of things that go deeper into a reading. ये ऊपर ऊपर से knowledge है.
ठीक है। एंड मैम आप जब सिखाओगे तो यू विल ऑल्सो टीच लाइक रेमेडीज फॉर दिस सो दैट द क्लाइंट्स इन केस I will we suggest deliver. the remedies. There are today, if you have learned remedies in any other modality, you can apply those remedies also. इसके जो Okay. थोड़े बहुत रेमेडीज है वो भी आप सीखोगे, और आपको और भी रेमेडीज आती है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Okay, ठीक है। okay, no problem, ma'am. Because yeah, usually in astrology we see the chart and depending upon the planets we give the remedies. But here ऐसा कुछ देखते नहीं है. It is just the date of birth we and the name we ask. So we don't see the You don't chart even or need date of birth in this. You don't need date of no. birth. Okay, okay, okay. No. So ठीक है। रेमेडीज हम लोग आप मतलब जो भी दिखाएंगे तो वो कॉमन रेमेडीज होंगी सबके लिए लाइक क्लाइंट्स के लिए भी ना. It depends on the कार्ड के हिसाब से होगी रेमेडी। Okay, okay, ma'am. Thank you so much. या you're welcome dear, you're welcome. सुलग्ना जी कहिए, प्लीज अनम्यूट, या इफ यू कैन स्विच Yes. ऑन योर वीडियो। हाँ जी, हाँ Yeah, जी good बोलिए। evening, ma'am. You explained very well. I was थैंक यू really, सो मच। yeah, I have met you in other platforms also. And ओके। as a like a co-student, but today I'm seeing you as a teacher. So, ओके, and and really the way you explain with like so much detail, it's really impressive. थैंक यू I सो मच, थैंक Yeah, यू। I have been very, I just wanted to understand. I'm very interested in tarot, and I just wanted to understand that, each people, like if I pull a card and you pull a card, the cards could be different for the same question for each यस, person, right? So how do you राइट। know that who's pulling the right card? Like, is there any such thing? See, normally what happens is when you pull a card, you have to see the energy of that card, whether it's a positive energy or a negative energy. Agar for the same question, if you pull a card and I pull a card, the cards may be different, but the meaning of the card ultimately might be very close. Okay. Or normally, one does not go to two people for the same question at the same time. It's not advisable. No, that Today, I if understand. you say, let's say for example, कि आपने पूछा कि will I get my visa for the US in the next 6 months? Yeah. Okay, you've asked me the question. I pulled out a card. The card which has come out is the strength card. What does the strength card say? Yes. Yes. So that Perfect. means the answer to your question is yes, you will get a visa for the US within the next 6 months. ठीक है? आपने किसी और से पूछा, या तो आपने खुद पुल किया कार्ड. You pulled out a card which is the Empress card. Which is Ultimately, what also is the yes. answer? Which is Yes. also yes. So the cards may be different for the question, but the meaning of the answer would be same, right? The interpretation and the final this thing will be the same. Like you will Will be your yes, yes. okay. And if I may ask, I know Prachi will say, so this is a further course that you're going to have, and it's for how many days? Only Prachi ji will be able to answer that, ma'am. I know. So okay. Yeah. Thank you so much. It was very You're welcome. nice. It was very nice. Thank you. Thank you so much. Does anybody else have a question over here? Nobody? I don't see any raised hands. Time prediction. Yes, time prediction hota hai. Today's recording that's going live on YouTube, so you can see it on YouTube. All right. Yes, ma'am, it is live on YouTube. हाँ हाँ, क्योंकि पूछ रहे लोग, तो yes, it's on YouTube and you'll be able to be able to see it on YouTube. Yes. एंड मैम इफ आई से जो मैंने बोला था कि ये तरीके आज जो हम सीखने वाले हैं बिल्कुल अलग हटके होंगे. यू हैव जी. justified my sentence and everyone here in the session will agree.
एंड सूनर वी विल लॉन्च द फुल कोर्स एज वेल नेक्स्ट मंथ। अभी पहले तो हम मोक्ष पथ के ऊपर बात करेंगे, फिर टैरो कार्ड, चक्रा, सारे कोर्सेज आएंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून इन द ग्रुप्स, वी विल अनाउंस द डिटेल्स वेरी सून। अभी तो पाइपलाइन में वी हैव न्यूमरोलॉजी कोर्सेज एंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज, बट yes, all these courses that will be announced soon. Within a 2 to 3 days we will announce. So ma'am, I guess सारे doubts भी हो चुके हैं. Thank you for the amazing बिल्कुल. session. Thank you so much everyone Thank for you so joining much. in. Thank you. Thank you everyone for attending, and I hope you all have got some value from today's session. Thank you so much. Goodbye.